Jato Gata Pitri Grihad Vrajam Editato Jato Gata Pitri Grihad Vrajam Editato Jato Gata Pitri Grihad Vrajam Editato Hatva Ripun Sutta Shatani Kritorudhara Hatva Ripun Sutta Shatani Kritorudhara Hatva Ripun Sutta Shatani Kritorudhara Jatogata Pitri Grihad Vrajam Meditato Hatva Ripun Sutta Shatani Kritorudhara Utpadya Teshu Purusha Kratubi Samijje Utpadyateshu Purusha Kratubi Samijje Utpadyateshu Purusha Kratubi Samijje Atmanam Atma Nigamam Pratayan Janeshu Atmanam Atma Nigamam Pratayan Janeshu Atmanam Atma Nigamam Pratayan Janeshu Utpadyateshu Purusha Kratubi Samijje Atmanam Atma Nigamam Pratayan Janeshu Jatogata Pitri Grihad Vrajam Meditato Hatva Ripun Sutta Shatani Kritorudhara Utpadyateshu Purusha Kratubi Samijje Atmanam Atma Nigamam Pratayan Janeshu Jatogata Pitri Grihad Vrajam Meditato Hatva Ripun Sutta Shatani Kritorudhara Utpadyateshu Purusha Kratubi Samijje Atmanam Atma Nigamam Pratayan Janeshu
आत्मानमात्मनिगमं कथयन् जनेषु Vaishnavis? Jata, after taking birth as the son of Vasudeva, Gata went away. Pitri Grihat, from the houses of his father. Vrajam, to Vrindavan. Edhita Arta, to the exalted position of Vrindavan. Hatva, killing there. Ripun, many demons. Sutta Shatani, hundreds of sons. Krita Urudhara, accepting many thousands of wives. The best of women. Utpadya, begot. Teshu, in them. Purusha, the Supreme Person, who exactly resembles a human being. Kratubi, by many sacrifices. Samije, worshipped. Atmanam, himself, because he is the person worshipped by all sacrifices. Atmanigamam, exactly according to the ritualistic ceremonies of the Vedas. Pratayan, expanding the Vedic principles. Janeshu, among the people in general. Translation. The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, known as Leela Purushottam, appeared as the son of Vasudeva, but immediately left his father's home and went to Vrindavan to expand his loving relationship with his confidential devotees. In Vrindavan, the Lord killed many demons, and afterwards he returned to Dwarka, where, according to the Vedic principles, he married many wives who were the best of women, begot through them hundreds of sons, and performed sacrifices for his own worship to establish the principles of household life. वे वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, किंतु तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर अपने विश्वास पात्र भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार बढ़ाने के लिए वृंदावन चले गए। वृंदावन में उन्होंने अनेक असुरों का वध किया और फिर द्वारका लौट गए, जहाँ उन्होंने वैदिक नियमों के अनुसार
अनेक श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ विवाह किए, उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न हुए और गृहस्थ जीवन के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए अपनी पूजा के लिए अनेक यज्ञ संपन्न किए। As stated in Bhagavad Gita 15:15, Vedaischa Savaya Ahameva Vedya. By all the Vedas, it is Krishna who is to be known. You want to do a sentence at a time, or shall I read the whole thing? जैसा कि भगवद गीता 15:15 में कहा गया है, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्या, सारे वेदों के द्वारा कृष्ण को ही जाना जाता है। Lord Sri Krishna, setting an example by his own behavior, performed many ritualistic ceremonies described in the Vedas and established the principles of grihastha life by marrying many wives and begetting many children, just to show people in general how to be happy by living according to Vedic principles. भगवान कृष्ण ने अपने आचरण से एक आदर्श स्थापित करते हुए वेद वर्णित अनेक अनुष्ठान संपन्न किए और अनेक पत्नियों के साथ विवाह करके तथा उनसे संतान उत्पन्न करके लोगों को यह दिखाने के लिए कि वैदिक नियमों के अनुसार रहकर किस तरह सुखी बना जा सकता है, गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना की। कृष्ण वैदिक यज्ञ के केंद्र बिंदु हैं, वेदेश सर्वे। The center of Vedic sacrifice is Krishna. Vedaischa Savaya Aham Eva Vedya. To advance in human life, human society must follow the Vedic principles personally demonstrated by Lord Krishna in his household life. The real purpose of Krishna's appearance, however, was to manifest how one can take part in loving affairs with the Supreme Personality of Godhead. भगवान कृष्ण के प्रकट का असली उद्देश्य तो यह दिखाना था कि मनुष्य भगवान के साथ प्रेम व्यवहार में किस तरह भाग ले सकता है। Reciprocations of loving affairs in ecstasy are possible only in Vrindavan. भावावेश में प्रेम व्यवहार का आदान-प्रदान वृंदावन में ही संभव है। Therefore, just after his appearance as the son of Vasudeva, the Lord immediately left for Vrindavan. In Vrindavan, the Lord not only took part in loving affairs with his father and mother, the gopis and the cowherd boys, but also gave liberation to many demons by killing them. As stated in Bhagavad Gita 4:8, Paritranaya Saranam Vinaschaya Chaduskritam. The Lord appears in order to protect the devotees and kill the demons. जैसा कि भगवद गीता 4:8 में बताया गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान भक्तों की रक्षा करने एवं असुरों का वध करने के लिए प्रकट होते हैं। This was fully exhibited by his personal behavior. उन्होंने अपने आचरण से इसे भली भांति दिखा दिया। In Bhagavad Gita, the Lord is understood by Arjuna to be Purusham Shashvatam Divyam, the eternal, transcendental, supreme person. भगवद गीता में अर्जुन भगवान को पुरुषम शाश्वतम दिव्यम के रूप में समझता है। Here also we find the words Utpadya Teshu Purusham. यहाँ भी हमें उत्पाद्य तेषु पुरुष शब्द मिलते हैं। Therefore, it is to be concluded that the actual truth is Purusha, a person. इसीलिए हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि परम ब्रह्म एक पुरुष है। The impersonal feature is not one of the features of his personality. निराकार रूप तो उनके व्यक्तित्व का एक प्रकार है। Ultimately, he is a person. He is not impersonal. अंततोगत्वा वे पुरुष हैं, वे निराकार नहीं हैं। And not only is he Purusha, a person, but he is the Lila Purushatam, the best of all persons. वे न केवल पुरुष ही हैं, अपितु लीला पुरुषोत्तम हैं और सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं।
Anjana Chaksalamitam Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapata. So here we see in these last two verses of the 9th canto how Sukadeva Goswami is summarizing Krishna's pastimes. यहाँ 9वें स्कंद के अंतिम 2 श्लोकों में हम देखते हैं कि किस तरीके से भगवान सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते हैं. Did everyone hear what he said? 9वें स्कंद के लास्ट के ये श्लोक के पहले 2 श्लोकों में हम देखते हैं कि किस तरीके से सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं. And actually, if we delve into this sloka, we can see there's a lot of information packed into here. और इस श्लोक में अगर हम देखें तो बहुत सारी और भी सूचनाएं दी गई हैं. And also the acharyas describe how Sukadeva Goswami, because he's narrated the nine cantos, he's finishing the 9th canto, and he's eager to talk about Krishna's pastimes. और आचार्य बताते हैं कि किस तरीके से सुखदेव गोस्वामी ये 9वें स्कंद को समाप्त करने वाले हैं और वो बहुत ही उत्सुक है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करें. So in 2 verses he's giving a summary of everything. तो ये 2 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी सारांश बताते हैं. So let's start unpacking this verse a little bit. तो इस श्लोक में थोड़ा सा चलिए हम चर्चा करते हैं. Because this verse primarily is describing the reasons why Krishna appears. क्योंकि ये श्लोक जो है ये बताता है कि भगवान कृष्ण क्यों आविर्भाव और कृष्ण का क्यों आविर्भाव हुआ. And as we know in the Bhagavad Gita, Krishna says, Paritranaya saranam vinaschaya chaduskritam dharmasak samstak vanataya sambhavami yuge yuge. To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principle of religion, I myself appear millennium after millennium. जैसे कि भगवद गीता में भी हम देखते हैं भगवान कृष्ण बताते हैं कि असुरों का वध करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए वो बार-बार इस पृथ्वी पर आते हैं. And we see that this is manifested in many different pastimes. और हम देखते हैं कि अनेक लीलाओं में ये चीज देखने को मिलता है. You know, Krishna in so many places he's killing different demons. अनेक लीलाओं में कृष्ण अनेक असुरों को मार रहे हैं. Especially we see in his childhood pastimes of Vrindavan. It's described there in the 10th canto that practically every day he killed a demon. जैसे कि वृंदावन में हर एक दिन भगवान असुरों का वध करते हैं. But actually only the more significant ones are being described. और केवल जो महत्वपूर्ण असुर हैं उन्हीं के वध की जो घटनाएं हैं हमें इस भागवतम में देखने को मिलती. Even from the point of when he was a baby, before he was even crawling. जब वो छोटे बच्चे थे तो भी जो है असुरों का वध किए. There was one time they were celebrating a festival. The Rajvasis were celebrating a festival. Mother Yasoda was carrying Krishna. She found that Krishna was too heavy, so she put him down underneath the cart. एक बार ब्रजवासी जो है एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे और यशोदा मैया जो है कृष्णा को लेकर के अपने गोद में रखी थी और जब उस समय ऐसा हुआ कि यशोदा मैया को बहुत ही भारी महसूस होने लगे कृष्णा और कृष्णा को उन्होंने नीचे उतार दिया. But she didn't understand that this cart was actually a demon in disguise. तो वो ये नहीं समझ पाई कि यहाँ पे जो एक काफ रखा हुआ है वो एक असुर के रूप में है. But Krishna knew this. Krishna knew that it was. लेकिन कृष्ण ये जानते थे. And so he manifested himself as becoming very heavy. So Yasoda Mai placed him on the ground. इसलिए कृष्ण अपने आप को बहुत भारी कर लिए और यशोदा मैया ने नीचे उतार दिया. And she placed him under the cart, and then she went about celebrating the festival. और यशोदा मैया उस कार्ट के नीचे कृष्णा को रख दिए और अपने कार्य में लग गए. And Krishna, tiny little baby with his small foot, he just kicked out. He kicked the cart and completely demolished the cart. और कृष्ण ने एक जो छोटे बच्चे के रूप में है अपने छोटे पैरों से उस कार्ट को धक्का दिया और वो जो है तुरंत वो टूट गया. And killed Sakatasura. और सकटासुर जो असुर के रूप में वो कार्ट में था वो मर गया. And we see there's so many wonderful pastimes like this with Trinavarta, with Putana, with Bakasura, Agasura. So many different demons were killed by Krishna. इस तरीके से देखते हैं कि कृष्ण अनेक असुरों का वध करते हैं. त्रिनावर्ता, असुरा, पूतना और अनेक असुर. All in the most wonderful ways. और सभी जो है अनेक
अद्भुत तरीके से जो है वध हुआ। You know, there's one demon, I can't remember which one it is, where he put his fist into the demon's mouth, and his fist grew in size and just choked the demon. तो एक लीला में हम देखते हैं भगवान जो है अपने मुक्के से जो है असुर को मारते हैं और वो असुर का वध हो जाता है। Or when Krishna and Balaram, you know, the cowherd boys, they came to Krishna and Balaram, they wanted to go to Talavan and enjoy the fruits there. और जो बाकी जो गोप हैं वो कृष्ण बलराम के पास आते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ तालवन में फल है और वो एंजॉय करना चाहते हैं। But they were frightened of the demons. लेकिन वो भयभीत भी होते हैं कि वहाँ पे एक असुर रहता है। So Krishna and Balaram, they went there and they grabbed the demons. The demons attacked them, and they spun the demons around and around and around. They gave up their life. They threw them up into the tall trees. और कृष्ण बलराम वहाँ पे जाते हैं और वो जो असुर है उसको पकड़ते हैं और गोल चक्कर में उसको घुमाते हैं और वो असुर का वध हो जाता है। And because of the weight of the demons in the top of the tall trees all fell over. जब असुर जो है वो ताल वृक्ष पे गिरते हैं तो इतने वो असुर भारी रहते हैं कि ताल वृक्ष भी गिर जाते हैं। And then the cowherd boys were able to easily gather up the fruits. और जो बाकी गोप हैं भगवान के जो मित्र हैं वो तुरंत जो है आसानी से वो फल का आस्वादन करते हैं। But it also describes how beautiful the forest looked with all these demons up in the trees. It was like decorations. तो ये भी लीला में वर्णन आता है कि कैसे सारे असुर जब ताल वृक्ष के ऊपर गिरते हैं तो एक अत्यधिक भव्य जो है वो दर्शनीय बन जाता है। And this is the nature of Krishna's pastimes. It is, even though he may be killing a demon, it looks very beautiful. तो ये भगवान की लीला है कि जब वो असुरों का वध करते हैं फिर भी वो बहुत सुंदर दिखते हैं। It's very attractive to the devotees. और ये भक्तों को बहुत आकर्षित करता है। But we need to understand that he's killing the demons is not the main reason he appears. लेकिन हमें ये समझना होगा कि भगवान जो है इस धरती पे आते हैं असुरों का वध करने के लिए, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण या मुख्य जो है कारण नहीं है। Srila Prabhupada explains this in many different places. प्रभुपाद जो अनेक बार इस चीज की वर्णन करते हैं। And he quotes this verse from the Bhagavad Gita. और वो भगवद गीता का श्लोक का भी ये वर्णन करते हैं। How Krishna describes in the Bhagavad Gita that he descends to annihilate the miscreants and to deliver the devotees. और भगवद गीता से प्रभुपाद कोट करते हैं कि किस तरीके से कृष्ण जो है वो आविर्भावित होते हैं यहाँ पे असुरों का वध करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए। And Srila Prabhupada explains that Krishna doesn't need to come to annihilate the demons because प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि असुरों का वध करने के लिए कृष्ण का जन्म लेने का जरूरत नहीं है। because we see the material nature can easily annihilate many thousands of miscreants. क्योंकि देखते हैं कि माया देवी जो है हजारों ऐसे असुरों का वध कर सकती है। Just we see like maybe 2 weeks ago I think now with a little bit of shaking that the earth killed 55,000 people. जैसे हम 1-2 हफ्ते पहले देखे कि थोड़ा सा पृथ्वी के हिलने से कई लोगों का मृत्यु हो गया। And that's just a little bit of shaking. What if the earth really started to shake? अगर थोड़ा सा पृथ्वी हिलता है तो इतने हजारों लोग मर जाते हैं। थोड़ा ज्यादा करके अगर पृथ्वी अगर कंपन करे तो क्या होगा? She could kill everyone on the planet. तो वो पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं सबको मार देगी। So the material nature is very powerful. तो माया शक्ति जो है बहुत ही शक्तिशाली है। She can easily take care of all the demons. तो वो सारे असुरों को आसानी से मार सकती है। And as far as Paritaraya Saranam, the devotees don't need saving. यहाँ तक कि परित्राण साधु नाम की सवाल है तो भक्तों को भी कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। Because they're already saved. क्योंकि वो हमेशा ही सुरक्षित है। It's described in the 9th canto. It says, Saranam Hriyam Mayam Saranam Hriyam Twam. That I am in the heart of my pure devotee. My pure devotee is always in my heart. नवें स्कंद में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान बोलते हैं कि मैं अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में हूँ और शुद्ध भक्त मेरे हृदय में। They know no one but me, and I know no one but them. मैं शुद्ध भक्तों के अलावा और किसी को नहीं जानता और शुद्ध भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानता। So for the devotees, there's no need to be saved because they're already saved. तो भक्तों को जो है कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती, वो हमेशा ही सुरक्षित होते हैं। So we can see that these are not really the main reasons that Krishna comes. He does do these things, but it's not the main reason he comes. तो हम देख सकते हैं कि ये जो है भगवान कृष्ण के आविर्भाव लेने का ये मुख्य कारण नहीं है। And this verse, there's an interesting word here. This editato.
ये जो श्लोक है बहुत ही रुचिकर है, यहाँ पे बताया गया है। So here Prabhupada uses this word in one way because it comes after Vrajam, which is indicating Vraja. तो यहाँ पे प्रभुपाद जो है चर्चा करते हुए व्रजम वर्ड का बारे में बताते हैं, Or Vrindavan. और वृंदावन के। And he's saying, he's using it to say to exalt the position of Vrindavan. तो यहाँ पे वृंदावन के जो उच्च स्तर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। Vishwanath Chakravarti Thakur, he explains this in a different way. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को अलग तरीके से समझाते हैं। And it's not to say that one's right and one's wrong, they're just giving a different perspective. ऐसा नहीं है कि एक गलत है एक सही है, सारे सही है और अलग तरीके से वो अपना अपना वर्णन देते हैं। Or a different understanding of what this verse is explaining. और अपना अपना समझ अपने अपने तरीके से देते हैं इस श्लोक के बारे में। So Vishwanath Chakravarti Thakur, he uses it to explain, and also Jiva Goswami, a similar point, uses it to explain how Krishna is expanding the different relationships, or expanding the exchange of the different relationships. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी दोनों ही इस बात का वर्णन करते हैं कि किस तरीके से भगवान अलग अलग संबंधों का रसास्वादन करते हैं। So we see during Krishna's pastimes how he deepens the affection that all his devotees feel for him. जैसा कि हम देखते हैं कि भगवान किस तरीके से अपने प्रेम को मैनिफेस्ट करते हैं, जिससे कि अनेक अलग अलग रस में जो भक्त हैं वो उनके प्रति आकर्षित होते हैं। Just like if we look at the early childhood pastimes of Krishna and Balaram in Vrindavan, जैसे कृष्ण बलराम के बचपन की लीलाओं का अगर ध्यान दें, they would do many seemingly naughty things, तो वो नटखट कार्य करते हैं, अनेकों नटखट कार्य करते हैं। things which, people might consider bothersome. जैसे कि उन लीलाओं को देखकर लोग समझ सकते हैं कि ये बहुत ही परेशान करने वाली घटना है। Just like when they were crawling, जैसे कि कृष्ण जो है रोल करते हैं, लौटते हैं, they would crawl up behind the calves and they'd grab their tails. कृष्ण बलराम जो है लौटते हुए जा करके बच्चिया के जो है पूंछ को पकड़ लेते हैं, And the calves would be frightened because they didn't know what was happening. बच्चिया लोग डर जाते हैं And so they'd run away और वो दौड़ के भागते हैं, with Krishna and Balaram holding onto their tails. और कृष्ण बलराम उनके पूंछ को पकड़े हुए रहते हैं, And they're bouncing along behind them in the dust. और जो बच्चिया है कूद कूद करके उन ब्रज पे जो है दौड़ते भागते हैं। Now some may think, well, why are they disturbing the calves? कभी कभी हम सोच सकते हैं कि क्यों कृष्ण बलराम जो है बच्चिया लोगों को इस तरीके से परेशान करते हैं। But the Brajbasis are looking at this and they think, oh, they are so beautiful. और लेकिन ये ब्रजवासी को बहुत ही प्रसन्नता देने वाला होता है, और वो देखते हैं कि अरे ये बहुत ही सुंदर लीला है। How their beautiful bodies are decorated with the dust of Vrindavan. वो देखते हैं कृष्ण बलराम किस तरीके से इस वृंदावन के ब्रज के धूल कण है उसमें लेटे हुए हैं और सुंदर लग रहे हैं। And then when they got older, they'd start to steal. जो जब वो और बड़े हो जाते हैं तो वो चोरी करने लगते हैं। Now, of course, we know when we were children, our parents would always teach us not to steal. हम जानते हैं कि जैसे हम बड़े होते हैं हमको अपने माता पिता सिखाते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, And if we ever stole, we got in a lot of trouble. और अगर हम चोरी किए तो हम परेशानी में पड़ जाते हैं। But Krishna and Balaram stealing is very different. लेकिन कृष्ण बलराम की चोरी करने का अलग ही स्वाद है, Because as we know, Krishna says, Aham savasya bhagavan matasavam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhavasma. That I am the source of all spiritual material worlds. Everything emanates from me. So who's he stealing from? तो हम देखते हैं लेकिन कृष्ण गीता में बोलते हैं हम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भासमन्विता। मैं ही सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत का स्रोत हूँ। तो यहाँ पे भगवान की चोरी करने का सवाल ही पैदा कैसे हो सकता है? So he would go and he would steal the butter and the yogurt from the gopis. वो गोपी के घर पे जाते हैं और वहाँ से उनके घर से मक्खन चुराई करते हैं। And then so because they didn't want him to steal. Well, they did want him to steal, but they didn't want him to steal. It was kind of interesting play. हालांकि वो चोरी करना नहीं चाहते थे। So they put the yogurt and the butter in pots and hang it from the roof so they couldn't reach it. गोपी चाहते थे कि वो चोरी ना करे, तो वो जो मक्खन का जो घड़ा था उसको और ऊंचा लटका कर रखते थे। And then Krishna and Balaram, they'd stack up all the different things in the house so they could reach the butter and the yogurt, and they'd poke a stick and break the pot, and all the butter and yogurt would come out. बलराम अलग-अलग चीजों को सजा करके उसके ऊपर चढ़ जाते थे
और छड़ी से उस घड़े को खोदते थे, And then they'd eat some of the butter or the yogurt. और उसमें से जब मक्खन निकलता था तो उनका स्वादन करते थे, And then they'd distribute the rest of the और monkeys. दूसरों को भी बांटते थे, And complain, oh, this yogurt's no good, it's only good for the monkeys. और वो गोपी का कंप्लेन भी करते थे, ये माता जी का जो मक्खन है उतना स्वादनीय नहीं है। And then sometimes, if they couldn't reach the butter or the yogurt, और कभी-कभी जब वो मक्खन के घड़े को पहुंच नहीं पाते थे, they'd go and pinch the gopis' babies and wake them up. तो वो जो गोपी थे, गोपी के बच्चों को जाकर चींटी काटते थे और उनको उठा देते थे, And they'd start to cry. तो वो बच्चे जो है रोने लगते थे, And then they'd urinate on the floor and run away. और वो दौड़ के भाग जाते थे डर के मारे। So, and like, from the normal perspective, they're such naughty boys. तो हम इस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से ये नटखट कार्य करते हैं। And then the gopis, they'd go and complain to Mother Yasoda, you see what your naughty son is doing. गोपी जो है जाते हैं और नंद यशोदा को कंप्लेन करते हैं कि देखो तुम्हारे बच्चे क्या कार्य कर रहे हैं। You know, he's coming to our house and he's stealing our butter and yogurt. मेरे घर में आके वो चोरी करते हैं मक्खन को। And we keep it in a darkened room so he can't find it. But then he's wearing all these beautiful jewels, and from the light of the jewels he can see where it is. हम उनको अपने मक्खन के घड़े को अंधेरे में रखते हैं, लेकिन फिर भी वो घर में जाकर के इतना वो अपने शरीर से प्रकाश निकालते हैं कि वो दिखाई देता है उनको। And then Mother Yasoda says, I'll take all the jewels off. She says, I'll take off all the jewels. हाँ, मदर यशोदा बोलती है कि मैं उनके जो बाहर निकाल दूंगी। And the gopis say, oh no, don't do that. लेकिन गोपी बोलती नहीं, उनके जेवरातों को मत निकाल। He's so beautiful. ये बहुत सुंदर है। You can't do that. हमें ये नहीं करना चाहिए। And then she says, then I'll punish him. तब वो बताते हैं कि यशोदा मैया बोलती है कि मैं इनको दंड दूंगी। Oh no, you can't punish Krishna. गोपी बोलती है नहीं, कृष्ण को तुम दंड मत दो। So even how he's doing all these different pastimes, even though it appears like from the mundane perception to be very naughty or mischievous, it's just nurturing the love that devotees feel for Krishna. भौतिक दृष्टिकोण से ये देख सकते हैं भगवान की लीलाएं बहुत नटखट है, लेकिन ये जो है बहुत ही आकर्षणीय है। And in all the different relationships he had, with the Pandavas, with the Kauravas, with the Yarus, with the Vrishnis, the Andakas, all these different relationships, we see how Krishna acts in a way to enhance the loving relationship. हम देखते हैं किस तरीके से अलग-अलग संबंधों में भगवान कृष्ण चाहे पांडु हो, चाहे पांडव हो, चाहे विष्णु हो, यदु हो, उन सबके साथ संबंध में अपना स्वागत करते हैं। But ultimately, the reason, and of course, we also see how here in this verse it talks about how he's acting according to Vedic principles. He's acting according to this dharma. इस श्लोक में ये भी देखने को मिलता है कि वो जो धर्म है उसके अनुसार भी वो कार्य करते हैं। How he marries according to religious principles, he begets children according to religious principles, and he raises them according to religious principles. पंडित के अनुसार भगवान कृष्ण जो है साधना करते हैं और करते हैं। Dharma samsthapanataya. He's saying that I come to show religious principles. धर्म संस्थापना आता है, भगवान बोलते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। And also it explains here in this verse how he shows devotees how to worship him. और इस श्लोक में ये भी बताया गया है, भगवान बताते हैं कि किस तरीके से भक्तों को उनको पूजा करनी चाहिए। At the end of the verse it says atmanam, it says here kratubhi samajay atmanam atmanigamam pratayam janeshu. So this last line of the verse. So लास्ट लाइन में हम देखते हैं इस श्लोक में क्रतुभि समीजे आत्मानम आत्मनिगमम प्रथया जनेषु। And it's explaining how he performed worship to establish how to worship him. तो वो बताते हैं कि किस तरीके से भक्तों को हमें पूजा करना चाहिए जिससे कि धर्म की स्थापना हो। And in the Krishna book we see how it's explaining Krishna's morning activities when he was a householder. कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक में देखते हैं कि भगवान बताते हैं कि किस तरीके से वो जो सुबह के क्रियाकर्म है वो करते हैं। So early in the morning the cock crows. सुबह जो है जो कौवा है वो आवाज देता है। Yeah? The मुर्गी। Cock-a-doodle-doo. Yeah. And an hour and a half before sunrise by the arrangement of nature.
1 hour and a half before sunrise, और 1.5 घंटा पहले, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले जो है during the Brahma Muhurta, ब्रह्म मुहूर्त के समय में the rooster crows. The rooster crows. Rooster means cock. मुर्गी जो है आवाज देती है। Yeah? You got that? मुर्गा। Yeah. And then Krishna's wives, they're cursing the rooster crowing. लेकिन जो कृष्ण की जो पत्नियां हैं वो श्राप देती हैं। Because it means Krishna's going to get out of bed and they're enjoying being in bed with him. क्योंकि वो जो है कृष्ण से विरह में आ जाएंगे, क्योंकि कृष्ण जो है उनके साथ संग कर रहे हैं। And he rises, he performs his morning ablutions. और कृष्ण जो है सुबह उठते हैं अपनी जो सुबह की दैनिक क्रिया वो करने के लिए। And he sits down to meditate. He sits down to meditate. और वो जो है ध्यान में लग जाते हैं। But who does he meditate upon? लेकिन वो किसका ध्यान करते हैं? Huh? On himself. वो स्वयं पर ही ध्यान करते हैं। But that doesn't mean that when we meditate, we should be meditating upon ourselves. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ध्यान करें तो हम खुद पे ही ध्यान करें। I had a funny experience years ago. I was visiting a temple. I was watching a pujari doing the morning worship. एक बहुत ही हंसने वाला एक घटना है कि एक बार सुबह में जो है And because the deities they had were not bathable, they were, I think they were wood or something. तो क्योंकि जो मॉर्निंग वर्शिप के समय में विग्रह का जो है they couldn't be bathed because they were wood. हाँ, क्योंकि वो विग्रह था, वो लकड़ी का था, तो उसको हम स्नान नहीं करा सकते। So he was doing this procedure called Manasadapaniya Snan. तो वो जो है ये मानसिक रूप से वो उस कार्य को कर रहा था, where you bathe the reflection of the deity. जिसमें वो जो विग्रह है उनके जो रिफ्लेक्शन है उसको जो है हम स्नान कर रहे हैं। Because the reflection is not different from the deity. क्योंकि भगवान का जो रिफ्लेक्शन है वो उस विग्रह से अलग नहीं है। But this pujari, he didn't understand this principle so well. लेकिन ये पुजारी जो है उस सिद्धांत को अच्छे से समझ नहीं पाया। So he had the mirror set up so he was seeing his own reflection. तो वो जो दर्पण रखा हुआ था उसमें वो अपना ही चेहरा देख रहा था। And he was bathing his own reflection. और उस दर्पण में जो है स्नान करा रहा था। So actually this is not the right way to do. लेकिन ये जो है सही तरीका नहीं है। And in the same way, when we meditate, we don't meditate upon ourselves. इसी तरीके से जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम खुद पे ही ध्यान नहीं लगाते। Like sometimes devotees perform manasa puja for the deities, but during that manasa puja, you don't meditate upon your form, you meditate upon the form of the Lord and his associates. तो कभी-कभी जो है भक्त लोग जो है मानसिक पूजा करते हैं तो उसमें खुद पे ध्यान नहीं लगाते, जबकि भगवान के विग्रह पे ध्यान लगाते हैं। Because sometimes what happens is when devotees start to meditate upon themselves in these situations, they start to concoct some idea of what their spiritual form is. क्योंकि जब वो खुद पे ध्यान लगाना चालू करते हैं तो भक्त जो है कुछ और ही मानसिक क्रियाकलाप उनका चालू हो जाता है। But this is unnecessary. लेकिन ये जरूरी नहीं है। Because as we advance in devotional service, that form will be revealed to us. तो जैसे ही हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही भगवान का जो रूप है वो ऑटोमेटिकली हमें रिवील होगा। It's important to avoid speculating. तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जो है अपने मन से स्पेकुलेशन ना करें। So anyhow, the point here is Krishna is showing us how to worship him. लेकिन यहाँ पे देखते हैं भगवान कृष्ण यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से उनको पूजा करनी चाहिए। And as I was saying in the Krishna book, he rises early in the morning. और कृष्ण बुक में भी ये बताया गया है कि वो किस तरीके से सुबह जल्दी उठते हैं। Indicating that we should also rise early in the morning. ये बताते हुए कि हमें भी जल्दी उठना चाहिए सुबह में। And he bathes and performs his ablutions and bathes. और वो अपना जो नैतिक क्रियाक्रम है वो करके फिर स्नान भी करते हैं। Also establishing religious principles. तो इस तरीके से वो धर्म की स्थापना करते हैं। And then he sits down and performs worship. और वो बैठ जाते हैं और भगवान का वो वर्शिप चालू करते हैं। But who's he going to worship besides himself, because he's the highest? तो वो किसका वो पूजा करेंगे? वो खुद का ही पूजा करते हैं क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है। But he's not showing us that we should worship ourselves. He's showing us that we should worship the highest. लेकिन वो हमें ये नहीं बताते हमें खुद का जो है पूजा करना चाहिए, बल्कि हमें भगवान कृष्ण का Because पूजा करना चाहिए। indeed he is the only person to be worshipped. क्योंकि वही एक व्यक्ति है जिन्हें पूजा किया जा सकता है। And he explains in the Bhagavad Gita to Arjuna
that if he did not perform religious principles, then the whole world would be cast into ruination. भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं कि अगर वो जो है ये एग्जाम्पल सेट ना करे और पूजा ना करे तो पूरा विश्व जो है उनका अनुकरण नहीं करेगा. Even though there are no religious principles that bind him. There are no religious, he's not obliged to follow religious principles. हाँ, ये हमें अंधा होकर के किसी भी religious principle को ऐसे follow नहीं करना चाहिए. But we are obliged to follow religious principles. हमें जो religious principles है उसको ढंग से पालन करना चाहिए. Because if we don't follow religious principles, we just become Varna Shankara. क्योंकि अगर religious principles का सही ढंग से पालन न करें तो वर्ण संकर बन जाएंगे. We become Malechas and Yavanas. Yeah. Because this is the thing that separates, a human being from a non-human. तो यही एक चीज है religious principle जो मानव और अमानव में अंतर पैदा करता है. There's a nice verse in the Hitopadesh that clarifies this. एक बहुत ही अच्छा श्लोक है बताते हैं. And it explains that the activities of eating, sleeping, mating and defending are common to both men and animals. But this is Dhammohi Adiko Vishesho, that the special quality of a human is Dharma. But if a human being doesn't perform Dharma, then Dharmahina Pashubhi Samana, they're the same as an animal. So this is what human life is for. Human life is for Dharma. And if we don't perform Dharma, then we're not human. And so what will happen is, for those who don't follow Dharma in this human form of life, in the next life, they will take a birth that is suitable to their activities. So if they live like an animal, they'll take birth as an animal. So Krishna here is also demonstrating the importance of Dharma. तो यहाँ पे भगवान भी इस श्लोक में दिखा रहे हैं और स्ट्रेस कर रहे हैं कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए. And how all human beings must follow Dharma. और किस तरीके से धर्म का पालन करना चाहिए. But the real reason, the most important reason for his appearance is none of these things. लेकिन भगवान का जो आविर्भाव का मुख्य कारण है वो ये सब नहीं है. The most important reason for his appearance is to show how the living entity can have loving exchanges with Krishna. भगवान के आविर्भाव लेने का महत्वपूर्ण कारण ये है कि किस तरीके से सारे जीव आपस में जो है अच्छे संबंध बनाकर रखें. And these loving exchanges culminate in prema. और ये जो संबंध है वो प्रेम में परिवर्तित हो जाता है. And we see the prema manifest in so many different ways. हम देखते हैं प्रेम कई तरीकों से मैनिफेस्ट होता है. In so many different degrees. और अलग-अलग लेवल पे. Just like we see Bhishma Dev on the Balakurukshetra. जैसे भीष्म देव को देखते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में. It's described, how Bhishma Dev, when he was shooting arrows, and they were cutting the arrows were cutting Krishna's transcendental body. हम देखते हैं कि कृष्ण जो है अपने तीर से भगवान के जो दिव्य शरीर है उनको काटते हैं. Bhishma, he was firing the arrows, but he was seeing like he was offering these flowers of love to his beloved. हालांकि भीष्मदेव युद्ध में तीर को छोड़ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कि वो फूल को भगवान को अर्पण कर रहे हैं. And Vishwanath Chakravarti Thakur, he describes how Krishna was seeing these arrows like the bites of a beloved on his neck. और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि किस तरीके से कृष्ण इस चीज को देखते हैं. कृष्ण ऐसा देखते हैं कि जिस तरीके से प्रेमी जो है प्रेमिका के जो बाइट होता है, so उस कटाव को जो है वो महसूस करता है. This was an exchange of prem between Krishna and Bhishmadev. और ये जो है कृष्ण और विष्णुदेव के बीच में प्रेम संबंध है. We also see with the Pandavas. ऐसा ही हम पांडवों के साथ भी देखते हैं. They knew nothing but Krishna. Their whole life was just simply focused around Krishna, pleasing Krishna, serving Krishna. वो कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं. उनका पूरा जीवन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही था. Everything they did was simply for the pleasure of Krishna. कुछ भी किए वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए. And so many different associates we see with Kunti Devi and with Uttara and Draupadi and Uddhava.
भगवान के अनेक भक्त जैसे कुंती देवी, उद्धव और इस तरीके से संबंध में These devotees all have this deep loving exchange with Krishna. ये सारे भक्त जो है भगवान के साथ पूरी तरीके से गहराई के साथ प्रेम संबंध में जुड़े हुए। But in all these cases, this loving exchange it's imbued with this Aishvarya. लेकिन ये सारे संबंध में हम देखते हैं कि ऐश्वर्य भाव प्रधान होता है। Because they're seeing that Krishna is the Supreme Personality of क्योंकि Godhead. ये सब देखते हैं कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। And we know with Bhishma Dev, he saw Krishna in this four-armed form of Vishnu. हम देखते हैं कि भीष्म देव कृष्ण को चतुर्भुज रूप में देखे। The other devotees, they were having the exchange with the two-armed form of Krishna. और कुछ भक्त बोलते हैं कि कुछ भक्तों के साथ भगवान जो है दो भुज के रूप में लीला की। So because they had this concept of this Aishvarya, their prema was not the highest level. तो चूंकि वो ऐश्वर्य भाव में भगवान के साथ संबंधित थे, इसलिए उनका जो भक्ति है उच्च कोटि का उतना नहीं माया। The loving exchanges of the residents of Vrindavan, and this is the point that Prabhupada is making here with this word iditarto. It's like the loving exchanges of the residents of Vrindavan. This was the highest. भगवान का वृंदावन में जो भक्तों के साथ जो प्रेम संबंध है वो सबसे ऊंचा माना जाता है। Because the other devotees, they're loving Krishna because he's God. क्योंकि बाकी जो भक्त हैं वो भगवान को इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि वो भगवान को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं। So there's some motive there, like an external motive. तो उनके पीछे उनका कुछ ना कुछ मोटिव रहता है। Whereas the residents of Vrindavan, they didn't have this concept of God. लेकिन वृंदावन वासी के अंदर ये भावना नहीं थी। Because for them, the concept of Krishna being God interfered with their love. क्योंकि अगर वो कृष्ण को भगवान मानते हैं तो वो उनके बीच के जो प्रेम संबंध है उसको जो है रुकावट डालता है। Even we see when Yasoda Mai, when she looked into Krishna's mouth and she saw the whole universe there, she started to contemplate, who is this boy? जैसा हम देखते हैं यशोदा में जब भगवान कृष्ण के मुख में भगवान का पूरा ब्रह्मांड विश्व देखने लगे तो वो सोचने लगी कि अरे ये कौन है। And then at one point she contemplated, is he the Supreme Personality of Godhead? एक समय ऐसा है वो सोचने लगी कि क्या ये पुरुषोत्तम भगवान है। And as soon as that point, as soon as that concept or that contemplation came into her mind, her motherly love and affection just overwhelmed her. लेकिन जैसे ये सोच में आया उसके बाद जो है उनका जो मातृभाव है वो ज्यादा प्रधान हो गया and she just considered, no, he is my son and I need to feed him. और वो सोचने लगी कि नहीं ये मेरा केवल पुत्र ही है। So we see that with the residents of Vrindavan, you know, with the persons outside of Vrindavan, their relationship with Krishna or you know this Aishvarya relationship, this is the dominant thing. तो यहाँ पे देखते हैं कि जो वृंदावन वासी के अंदर जो संबंध है भगवान कृष्ण के साथ वो ऐश्वर्य के भाव स्तर पे नहीं है। But and nothing can overpower that relationship. Nothing overpowers that concept of Aishvarya. तो ये जो भगवान के बीच का संबंध है भक्तों के साथ वासी के साथ वो कोई जो है The devotees outside of Vrindavan, not the devotees in Vrindavan. Nothing can overpower this concept of Aishvarya. Yeah. Whereas you see with the residents of Vrindavan, sometimes it happens that this Aishvarya is introduced there. जब शिव जो है वृंदावन में थे तो ये ऐसा हुआ कि थोड़ा सा ऐश्वर्य भाव आया था। But their love for Krishna is so strong and so pure that it just pushes through that. It overrides that. लेकिन जो भगवान के साथ वो प्रेम है वो ऐश्वर्य भाव से भी ऊपर चला जाता है। Just like we see once when Krishna was dancing with the gopis, he's enjoying rasa dance. जैसा हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान जो है गोपी के साथ नृत्य करते हैं। And he disappeared from rasa dance. और तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं। And they're running everywhere looking for और Krishna. गोपी इधर-उधर भगवान को खोजने के लिए दौड़ते हैं। And then Krishna decided to play a trick. और कृष्ण एक ट्रिक करते हैं। So he manifested a four-armed form, his Narayan feature. और वो अपने आप को चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट करते हैं। And so the gopis, they came, they offered respect to Narayan.
और सारे गोपी आकर के भगवान को प्रणाम करने लगते हैं। Oh, my dear Narayan, ओ नारायण, where's Krishna? कृष्ण कहाँ है? So you can see how their love, even though Narayan, the Supreme Personality of Godhead, is manifest before them, तो यहाँ देखते हैं हालांकि कृष्ण नारायण के रूप में आया, फिर भी वो गोपी का भाव है नारायण को, and the natural instinct of the devotee is to worship Narayan. और जो प्राकृतिक रूप से गोपी के अंदर भाव है नारायण को पूजा करने का है। Their love for Krishna was so powerful that it just overrode all of that. कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना शक्तिशाली था कि वो ऐश्वर्य भाव से ऊपर। And this is why the residents of Vrindavan, their love is considered supreme. और इसी कारण से जो वृंदावन वासी का जो प्रेम है कृष्ण के साथ वो सबसे ऊंचा माना जाता है। Because nothing can interfere with that relationship. क्योंकि उसके बीच में कुछ भी जो है रुकावट नहीं डाल सकता है। They'll even give up their own sense of dignity or their position in society simply for the pleasure of Krishna. वो यहाँ तक कि अपने समाज में अपनी गरिमा को, अपने संबंधों को भी तोड़ देते हैं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। They are so absorbed in loving and serving Krishna that 24 hours a day they cannot help but think of Krishna. वो भगवान के प्रसन्नता के लिए उनके सेवा में इतने इंगेज रहते हैं कि वो कृष्ण के अलावा और किसी का चिंतन नहीं कर सकते। And every activity they do is simply based around pleasing Krishna. और जो भी वो क्रियाकलाप करते हैं वो भगवान कृष्ण की केवल प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। And so this is what's being explained to us here in this verse is the main reason, the real reason Krishna comes down is to show the supremacy of prema. तो यहाँ पे इस श्लोक में इस चीज को स्ट्रेस किया है कि भगवान वाकई में यहाँ अब आविर्भावित होते हैं क्योंकि वो जो है वो प्रेम संबंध को उनके जो गोपी के बीच में है उनको ऊंचा दिखाना चाहते हैं। But in particular, as Srila Prabhupada points out in this verse, is to show the supremacy of the prema of the residents of Vrindavan. तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो ब्रजवासी के साथ भगवान का प्रेम है उसको ऊंचा दिखाना ही इस श्लोक का तात्पर्य है। And specifically to show the supremacy of the love of the gopis of Vrindavan. और उसमें से भी सबसे ऊंचा जो गोपी के साथ भगवान का जो संबंध है उसको ऊंचा दिखाना है। And Lord Chaitanya, he makes this same point in the और Chaitanya चैतन्य Charitamrita. महाप्रभु भी इसी चीज को बताते हैं। Okay, so any questions? कोई प्रश्न है? Hare Krishna. नजदीक करो। We see, like when we do, apart from hearing from our parampara, like generally when we see from outside people perspective, and before coming to Krishna consciousness and hearing from parampara, so generally Krishna's pastimes are expressed, but not so much importance is given to his dealings with the gopis. We see little Krishna and so many Krishna Leela there. So in that way, outside it is not so much of stress like how much your gopis used to love him, and especially like his leelas with Gopas and always like that. So is there something Prabhu, that it has not been made so much stress in public? हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी क्लास के लिए। हम देखते हैं कि हमारे परंपरा में छोड़कर बाहर के परंपरा में जाते हैं तो वहाँ पे जो कृष्ण का गोपी के साथ जो संबंध है उसको ज़्यादा जो है अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। तो There's two verses in the Bhagavatam that come to mind. तो भागवतम के दो श्लोक जो है मेरे मन में विचार में आते हैं। The first one is Nate Vidu Swata Kritim Vishnu. They do not know that the destination of life or the supreme goal is Vishnu. तो पहला ये है कि बाहर के लोग ये नहीं जानते हैं कि उनका रियल जो लक्ष्य है वो क्या है, भगवान विष्णु को या कृष्ण को प्राप्त करना। They've got no idea. उनको कोई इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। And the other verse that comes to mind is Matina Krishni Paratosato Vamito Bipeta Grihavatanam Adanta Gobi Vishatam Tamishram Puna Punas Chavita Chavananam. They're living their lives like hogs and dogs. They've got no idea. वो सुअर और कुत्तों की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको भगवान के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। And because sense gratification is the goal of their life, they will never understand Krishna. क्योंकि इंद्रिय तृप्ति ही उनका जीवन का लक्ष्य है, इसलिए वो कृष्ण को कभी समझ ही नहीं पाएंगे।
Even so-called religionists, the goal of their life is sense gratification. यहाँ तक कि जो तथाकथित धार्मिक फॉलोअर है वो भी कृष्ण को नहीं जानते। They want to have nice family, they want to have nice wife, they want to have nice children, they want to have good job. उनका परिवार है, उनका अच्छा जॉब है, उनके पास सब कुछ है। It's all focused on them, on the self. It's all focused on them. It's focused on the self. हाँ, वो कृष्ण के लिए नहीं, उनके खुद के लिए है। How they can have a better life. और वो यही सोचते हैं कि किस तरीके से उनका अच्छा जीवन हो सके। Nate vidu swata kritim Vishnu. They'll never understand. वो कभी ये नहीं समझ पाएंगे। Durashaya ye bahirataman. They're bound up by these strong desires. वो अपनी इच्छाओं से बंधे हुए हैं। That's why they explain Krishna's pastimes. Like essentially, it's sense gratification for them. इसीलिए वो कृष्ण की लीलाओं को इंद्रिय तृप्ति की तरह देखते हैं। It's mythological. वो मिथोलॉजी समझते हैं। They've got no idea what's actually happening. उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि भगवान कृष्ण कैसे क्या करते हैं। Last night, Srila took me down to Mahakal corridor. कल रात में सुहित प्रभु जी को महाकाल कॉरिडोर लेके। It's very beautiful. बहुत ही सुंदर है। There's a lot of money being spent there. इसमें बहुत पैसा लगा हुआ है। But actually, they wasted their money. लेकिन बहुत पैसा बर्बाद कर। They should have made a Radha Madha Mohan corridor. उनको बहुत कॉरिडोर बनाना चाहिए। And explain that, or a Chaitanya Mahaprabhu corridor. और चैतन्य महाप्रभु कॉरिडोर बनाना चाहिए। And help people understand what is the purpose of life. और ताकि लोगों को समझ में आए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। Because we went to the Mahakal temple, and I guarantee you that everyone who was going there was asking, Dhanam Dehi, Janam Dehi, give me this, give me that. They're asking for this. लेकिन महाकाल कॉरिडोर में जो भी जा रहा है वहाँ पे यही मांगने के लिए कि जन्म दे ही धर्म दे। How many people there last night were asking for pure devotional service? कितने लोग जाकर वहाँ शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना करने जाते हैं? Because they don't understand what the goal of life is. क्योंकि ये जानते नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। Therefore, you hear their explanations. The only thing that results is confusion. इसीलिए अगर उनकी बातें सुनेंगे तो केवल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। That's why we should only hear from authorized acharyas. इसीलिए जो ऑथराइज्ड आचार्य हैं उन्हीं से हमें केवल सुनना चाहिए। Because they know what the goal of life is. क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। I'm reading this section in the Chaitanya Charitamrita right now, and it's talking about Raghunath Das Goswami. चैतन्य चरितामृत में एक सेक्शन पढ़ रहा हूँ जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बताया है। And in the verse that I was reading last night, usually I try to read 10 verses of the CC every night before I go to bed, and it was talking about Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and Raghunath Das Goswami. तो कल रात में मैं पढ़ रहा था, मेरा श्लोक याद नहीं है। जनरली मैं 10 श्लोक एक बार में पढ़ता हूँ, तो उसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में चर्चा हुआ है। And it mentions how with Rupa and Sanatan, how Chaitanya Mahaprabhu had given them the instruction, he'd given them Vrindavan and told them to develop it. तो उसमें बताया गया था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन को अपना आदेश देते हैं, वृंदावन देते हैं और बोलते हैं कि तुम वृंदावन को और उसको एक्सप्लोर करो। So it's not like it was a part-time job. और कि ये पार्ट टाइम जॉब नहीं दिए, Something they did in their spare time. कि वो अपने खाली समय में कर सकते हैं। It was their life and soul. ये उनके जीवन का लक्ष्य था। And in the same way, he guided Raghunath Das Goswami to practice renunciation and give an example of इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को भी आदेश देते हैं कि किस तरीके से वो वैराग्य का पालन करें। And Raghunath Das Goswami, his renunciation was constantly increasing. रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य जो है समय के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ता ही गया। Even like in the verses I was reading last night, it was describing that what he used to do is he would go to, because there's all these shopkeepers there that distribute Mahaprasadam. कल के श्लोक में हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से रघुनाथ दास गोस्वामी जो दुकान पर जाकर करके और वहाँ पे जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। And after a few days it would become rancid and couldn't be sold. और जो दुकानदार जो है उन महाप्रसादों को बेच नहीं पाते थे। And so they would throw it to the cows. तो वो जो है गायों को फेंक देते थे, गायों को खाने के लिए। But even the cows wouldn't eat it. तो इवन गाय भी नहीं खाते थे।
So he would gather up all this Mahaprasad, तो वो महाप्रसाद को रघुनाथ वैष्णव स्वामी उठाते थे, especially the rice, और खास करके जो चावल था उसको, and he'd wash it very, very thoroughly, और अच्छे से उसका धुलाई सफाई करते थे, and wash away all the rancid covering, and then just eat the inner part of the rice. तो जो ऊपर का भाग है जो खराब हो गया था उसको निकाल देते थे, और जो अंदर का पार्ट है उसको खाते थे. It wasn't just an external sort of pretense, he was just so renounced. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पूर्ण रूप से बैरागी थे. Chaitanya Mahaprabhu told him not to eat fine foods, not to dress finely, and not to associate with him properly. And that was his life and soul. चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया था कि तुम्हें अच्छा नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं पहनना चाहिए, और यही उनका जीवन था. So by you are your association. If you associate with worldly minded people, you become worldly minded. तो अगर बाहर के लोगों के साथ आप स्नेह करेंगे तो बाहर के लोगों जैसा आप बन जाएंगे. But if we associate with these great personalities, we'll become like them. अगर महान भक्त उनका पुस्तक पढ़ करके. So if you want to become like Prabhupada, study his books. अगर प्रभुपाद जैसा बनना चाहते हो तो प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करें. These people, it's like if you listen to other people, you'll just become confused about what the goal of life is. अगर बाहर के लोगों का आप श्रवण करेंगे तो आप पूरे जीवन कंफ्यूज ही रहेंगे. That's the only result. वही एक परिणाम होगा. But if you listen to the acharyas, अगर आप आचार्य को सुनेंगे, you'll go back to Godhead. भगवत धाम चले जाएंगे. वो Take me with you. अपने साथ मेरे को भी ले सकते. Anything else? So I'd like to thank everyone for their wonderful hospitality. मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से मेरा देखभाल कर रहे हैं. I'll be leaving for Delhi early tomorrow morning. कल सुबह में मैं दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा. But every time I come here, I remember years ago when I first came here, I think it was 2015, and just like looking at what Bhakti Charu Maharaj has established here. जब भी यहाँ पे मैं आता हूँ तो मैं लास्ट टाइम 2017 में आया. जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ पे भक्ति चरण स्वामी महाराज को ही मैं देखता हूँ. He established this beautiful temple. उन्होंने कितना सुंदर मंदिर बनाया है. Nice brahmachari ashram. ब्रह्मचारी आश्रम बनाया है. Apartments for devotees to live in. और गेस्ट हाउस भी बनाया है बहुत सुंदर. Not guest house, the apartments, the greenhouse for apartments. अपार्टमेंट्स बनाया है. Yeah, the guest house for guests to come. और गेस्ट हाउस भी बनाया है गेस्ट को आने के लिए रहने के लिए. Goshala. गौशाला भी बनाया है. And also these businesses where devotees are employed. और बहुत सारा जो बिजनेस है जिसमें भक्त लोग जो है संलग्न है. This is such a wonderful example of devotee care. और ये बहुत ही अच्छा सुंदर जो है उदाहरण है इस तरह की डिवोटी केयर किया जाए. Looking after the devotees so they can, peacefully execute Krishna consciousness. Everything you need is here. जिससे कि वो जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस अच्छे से प्रैक्टिस कर सके. Yeah, everything you need is here. अगर आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पे उपलब्ध है. To go back to Godhead. भगवत धाम जाने के लिए. So, yeah, very, very wonderful situation. बहुत ही सुंदर. Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhakti Vrinda ki, Shai Nitai Gaur Premanandi.